Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. Assalamu alaikum, Ismail. Assalamu alaikum. Izza, welcome to the class. Izza, you can, everybody can see your chat. If you, agar aap post mein jao aur aap chat mein jaake na do everybody will be able to see you. And if you want to ask a question, you can always raise your hand, come on the mic, and that's how we'll do it. Hatim, we're ending kinematics and starting the new chapter. Basil, assalamu alaikum. Daniel, assalamu alaikum. Bira, assalamu alaikum. Maz, assalamu alaikum. How are you? Assalamu alaikum, Marine. Assalamu alaikum, Tulsina. Assalamu alaikum, Moyuddin. Humayun, Zamzam. Assalamu alaikum. Minu, assalamu alaikum. Tulsina, you scored 17 on 20 in your physics test. Well done. That is so good. Must have felt good. I'm so glad that you were able to score well. Ashar, Ifra, assalamu alaikum. Shezil, assalamu alaikum. Varda, Daniel, assalamu alaikum. Ariba, assalamu alaikum. Tehreem, assalamu alaikum. I look gorgeous with the cap. Okay, should wear it more. Abiya, assalamu alaikum. How's it going? And assalamu alaikum to the YouTube audience as well. As always, Mondays are on YouTube. So in the last class, if you guys remember, we basically finished off speed time graphs, right? और बिल्कुल आज भी आप लोग अपने जहानत का मुजाहिरा on YouTube कर सकते हैं because everybody on YouTube will be watching you today. So moving on, guys, here's a case. आज हमने we're going to finish kinematics and we're going to start forces. Also, very, very important news. You finished waves and you started light. So those of you who are taking the course, please make sure that you are watching the light dedicated videos which are assigned to you. They'll help you because when you'll do them with me, that'll be like the second time you're doing it. So it's going to really give you that kick. And inshallah, the reason why I've put it up is because I know your midterms are coming up. So why not score like Dulcina has? Chalo, kinematics को खत्म करते हैं. Kinematics के अंदर एक question आता है that you have a ball which is thrown straight up, it reaches maximum height, and it comes down. All right? You guys can't see my screen. Can you guys see my screen now? Perfect. So there comes a question where you have a ball which goes straight up, reaches maximum height, and comes down. Now, please tell me, if you throw an object upwards, would that be to a large height or to a small height? What do you think? आप जितना मर्जी ऊपर फेंक लें आप, it'll always be a small height. It'll always be a small height, okay? So a ball is thrown upwards. It reaches maximum height. And falls back. The question that I have for you is, you guys have to sketch what does the speed versus time graph look like for this scenario. शाबाश, पहले मुझे speed time graph के बारे में बताएं. Well done. Also, are you guys praying? I told you to pray about something on Saturday. कितने लोगों ने वाकई में पढ़ी है? सच सच मुझे बताएं. कितने लोगों ने दुआ वाकई मांगी थी? मैंने एक दुआ बोलनी थी करने को. ये नहीं मेरे मुंह पे नहीं कहना, सच सच बताना है. थैंक यू शेजिल, थैंक यू मेरीन, और जिन्होंने नहीं की प्लीज करें. यस, अब वर्कर ऑन सैटरडे. बड़ी जरूरी मैंने एक अनाउंसमेंट की थी फॉर द वेब ऐप, रिमेंबर?
So we're launching a web app, inshallah. But आप लोग की दुआएं चाहिए. There are a lot of hurdles in it. सही है. So please कीजिएगा याद से. Recordings are uploaded. Saturday की recording uploaded है. All recordings are uploaded. Inshallah. Chale ji, let's do this. So when you throw an object upwards, my first question to you is, what happens to the speed of the object as it goes upwards? Does it increase or does it decrease? जब ऊपर हुमायूं किसी चीज को फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ती है कम होती है? वाह जी वाह. कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ती है, कुछ कह रहे हैं कम होती है. वाओ. और ये देखो, let me throw this. This is an object, goes up. स्पीड ऊपर जाते हुए बढ़ी या कम हुई? इंक्रीज हुई. मेरीन, अगर ये इंक्रीज हुई तो फिर तो इसको ऊपर जाके मेरी छत को तोड़ के इसको तो स्पेस में निकल जाना चाहिए था. अगर स्पीड इसके नीचे अगर रॉकेट मैंने फिट कर दूं, यस, फिर तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी. बट इसके नीचे कोई रॉकेट नहीं फिट हुआ हुआ. सो आई एम ऑलवेज अज्यूमिंग दैट द बॉल हैज लेफ्ट द हैंड. अफीफा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, शायद आपको फिर समझ आ जाए. ये देखें. Let me show this to you. Can you guys see this? So this is a launcher. I'm going to launch a ball. I'll make it slow for you so that you notice. Watch, देखो. ये ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? Let me stop it here. Increase कर रही है? Really? ठहरो. Let me show you with arrows. Let me show you the speed. So अब आपको ग्रीन एरो नजर आएगी. अफीफा, गौर से देखना और अब बताना. ये ग्रीन एरो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करिए, स्पीड को रिप्रेजेंट करिए. मुझे बताओ, ग्रीन एरो का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है ऊपर जाते हुए? छोटा हो रहा है ना, तो स्पीड डिक्रीज कर रही है. खुद सोचो ना अफीफा, अगर ऊपर जाते हुए स्पीड इंक्रीज करेगी फिर तो लाइक आप फुटबॉल को ऊपर फेंको और अगर उसके ऊपर तक स्पीड बढ़नी है फिर तो वो आसमान को फाड़ के स्पेस में निकल जाएगी. यू अंडरस्टैंड? यस स्माइल. जस्ट रैपिंग अप. सो अफीफा, हमने पहले भी किया हुआ है, लिख लो इस बात को कि ऊपर जाते हुए योर स्पीड डिक्रीजेस. याद रखना, ये जो लोग कहते हैं स्पीड इंक्रीजेस, ऊपर जाते हुए योर स्पीड डिक्रीजेस. लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन. या ऊपर जाते हुए योर स्पीड decreases, and when you're coming down your speed increases. Are you guys with me so far on this? Everyone? Yes. अब जब आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी तो आपने एक हाई स्पीड से स्टार्ट करके लो स्पीड पे आना है. ओवर हियर मुझे बताओ, when you're at your highest point, is your speed zero? Yes or no? Humayun, acceleration is constant. It's a small height. You've forgotten the previous lecture. Small height के अंदर मैंने पिछली बार भी बताया था. I think एक हफ्ते से हम ये डिस्कस कर रहे हैं. Small height के अंदर acceleration is constant. It's 9.81 meter per second square. Don't forget that. At the highest point, is your speed zero? Yes or no? That is my question. It is, right? Yes, Fatma, go ahead. You have a question? Sir, how is speed zero at the highest point? Isn't it supposed to start like from the bottom, फिर ऊपर जाएगा, फिर उधर से decreasing acceleration? ये देखो. I'm going to launch it. ऊपर जाते हुए स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? कम. और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो. रुकना, उसने वापस नहीं आना. नहीं, लेकिन ग्राफ नहीं, मुझे ये आप आप ग्राफ को छोड़ें. आप मुझे बताएं, ऊपर जाते हुए स्पीड, मेरा सवाल ये था कि व्हेन इट रीचेस हाईएस्ट पॉइंट शुड द स्पीड बी जीरो और नॉट? पहले ये बताएं. यस. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होगी या नहीं होगी? यस.
ठीक है, क्योंकि वो रुकेगा तो वापस आएगा ना, वरना अगर रुकेगा ही नहीं तो वापस क्यों आएगा? उसने नीचे आना है, जिसके लिए उसको ऊपर जाते हुए रुकना है, रुक के नीचे आना है। क्या ये बात समझ आएगी आपको? नाउ Yes. योर सेकंड क्वेश्चन फातिमा। फातिमा ये देखो बिल्कुल स्टार्ट में, कैन यू सी द साइज ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, द स्पीड? कैन यू सी दैट द स्पीड इज लार्ज एट द बिगिनिंग? लाइक जब ये एक्सप्लोजन होगा तो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी, Yes. और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी। Yes. सही है। और मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोगों के जहन में आता है कि जी स्टार्ट में तो स्पीड जीरो होनी चाहिए, आपके भी जहन में यही आया होगा कि स्टार्ट में तो स्पीड जीरो होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं, एंड इफ यू लुक एट माय डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स, आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड्स, लिख लो नोट में, when an object is thrown upwards, please write this down and don't forget this. When an object is thrown upwards, assume that the object has left the hand. When an object is thrown upwards, assume that the object has left hand. Assume करो कि object हाथ से निकल गया। When an object is thrown upwards, जब जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, assume करो कि वो ऑब्जेक्ट हाथ से निकल गया। अब मुझे बताओ, जब हाथ से वो निकल जाएगा उस टाइम पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? हाथ में नहीं है, हाथ ज़्यादा से छूट गया, ज्यादा हो गया। और अब जब ऊपर जाएगा तो स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम। और टॉप पे जब पहुंचेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 0. जीरो। और अब जब वो नीचे आएगा तो स्पीड ने बढ़ना या कम होना? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सही है। सो आई होप दैट क्लैरिफाइज। ये ग्राफ मेरी फातिमा ऊपर से क्यों शुरू हो रहा है? ये ग्राफ ऊपर से इसलिए शुरू हो रहा है बिकॉज शुरू में आपकी स्पीड ज्यादा थी, वो कम होती गई होती गई होती गई होती गई, आप टॉप पे पहुंचे, आपकी स्पीड जीरो हो गई। आर यू विद मी? Yes. सही है। सो इफ लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, देन दिस इज पॉइंट ए, इफ दिस इज पॉइंट बी, देन दिस इज पॉइंट बी। आर यू विद मी? अब Yes. मुझे ये बताओ बच्चे, जब ये बॉल ने नीचे वापस आना है उसी हाइट पे, उसी लेवल पे सी पे आना है उसने, तो विल द स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम बी टू सी? Increase. It will, sorry, come again? Increase. Increase, of course. And if it increases, तो ये लाइन मैं कहाँ लेके जाऊं, वापस ऊपर? yes or no? Yes. Like this? Yeah. Does that make sense? Yes. तो ये आपको बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। Is it clear? Yes, sir. Acha. Perfect. Thank you so much. Now, the next question that I have for you is, और ये आ सकता है एग्जाम में, they will say, please sketch the velocity time graph for this scenario. Please sketch, Assalamualaikum Hassan, sketch the velocity time graph for this scenario। और उसमें एक चीज वो बोलेगा, प्लीज लिख लो, assume upward direction to be positive. Assume upward direction to be positive. Varda, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर ऊपर जाने की एक्सेलरेशन डिक्रीज जो हो रही है, Acceleration constant रहती है, it's a small height, acceleration does not change. Whether you're going up or down, acceleration does not change. ओके सही है। एक्सेलेरेशन चेंज कब होती है? जब लार्ज हाइट होती है। याद है हमने लास्ट टाइम, जब आप जहाज से छलांग मारते हो ओके। कि स्मॉल हाइट्स है, स्मॉल हाइट्स में एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। तो एंड सर रामीन हैज ग्राफ एब्सोल्युटली, का ग्रेडियंट जी दोनों लाइन पे सेम होगा, मतलब एक ज्यादा बिल्कुल स्लो बिल्कुल नहीं सेम होगी? होगा, बिल्कुल सेम होगा, 100% सेम होगा। और मुझे बताओ इससे ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी? 9.81। एग्जैक्टली, बिकॉज द ग्रेडियंट शोज एक्सेलरेशन। समझ गई? अब जी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन स्मॉल हाइट्स।
जिसकी वजह से एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ जी बताएं अब जल्दी से मुझे। अफीफा, कैन आई हैव यू ऑन द माइक? या हतीम, कैन आई हैव यू ऑन द माइक? जी अफीफा। अफीफा मुझे ये बताओ, डू यू जी सर। अंडरस्टैंड दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस। सही है। सो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इफ आई एम सेइंग दैट अज्यूम अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने वाला डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? यस। अब मुझे बताएं, ये बात तो डिसाइडेड है दैट एज यू गो अप योर स्पीड विल डिक्रीज। डज दैट मेक सेंस? यस सर। सही है। सो आर यू गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव वेलोसिटी और अ नेगेटिव वेलोसिटी? यू आर गोइंग अप। Positive Why positive? because it's going upward. And upward direction is considered to be Positive. positive. It's going up. Upward direction is considered to be positive. इसलिए you're going to start off from a positive velocity, not a negative velocity. याद रखिएगा। क्या ये बात समझ आई सबको? Exactly, the velocity is a vector quantity, so direction बड़ा important है देखना। कि आपको क्वेश्चन कहता क्या है? कहता है assume upward direction to be positive. That means that ऊपर जाते हुए कोई भी चीज जो वेक्टर होगी पॉइंट करेगी वो पॉजिटिव होगी। Now when you're going up, your velocity is pointing up, so it has to be positive because the question said it's positive. अब मुझे ये बताओ कि as you go up, Afifa, does your velocity increase or decrease? Decreases. Decreases, बिल्कुल जो स्पीड के साथ होता है। और पॉइंट बी पे पहुंचे वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी? 0. 0. And then when you're coming down, तो आपकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। इंक्रीज होती है। मे वो दैट मेक सेंस राइट? लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। हाँ, कि वो नेगेटिव में क्यों जाएगा? Because अगर upward direction positive है तो downward direction negative होगा। तो मैं भी, मुझे कमेंट में डराती रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज समझ आ रही है। So downward direction is negative. Guys, did you understand? She's saying downward direction negative है। अफीफा अपनी जुबान में समझाओ इन सबको। How did you understand this? क्योंकि upward direction यानी अगर ऊपर जा रहा है तो वो positive होगा, तो इसका opposite होगा। नीचे आया तो नीचे positive का opposite negative होता है, तो नीचे आते हुए negative होगा। और नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। तो फिर ये लाइन को मैं नीचे लेके चला जाऊं यूं, क्योंकि मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं नेगेटिव में। Would that make sense? सर लेकिन speed हाँ increase नहीं बताओ कर बताओ। रही। हाँ बिल्कुल। तो ये -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 बढ़ती जा रही है। आपके ज़हन में ये तो नहीं आ रहा कि -4 का मतलब है कम हो रही है? नहीं, इसे समझ आ गई है। याद है मैंने एक नंबर लाइन की, आई थिंक आई मेड अ नंबर लाइन इन वन ऑफ योर क्लासेस एंड आई एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, दैट -1 इज स्मॉल एज कंपेयर टू -2। -2 के एरो बिगर होगा, -3 और बड़ा होगा, -4 और बड़ा होगा। I think it was Saturday's class or Thursday's class. Go and check it out. ठीक है? So I'm extending the line because I'm drawing a velocity time graph, Maheen, and velocity time graph tells you about direction. So if I'm going down, it has to be negative because I've assumed the upward direction to be positive. That's why I'm going down and I'm increasing my velocity as I'm going down because नीचे आते हुए स्पीड भी बढ़ती है, अगर स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। स्पीड इज स्केलर, दैट्स व्हाई स्पीड में हम वापस ऊपर चले गए थे, हमने स्पीड बढ़ाते गए ऊपर चले गए। आप समझो कि बेसिकली इसी लाइन को हमने नीचे रिफ्लेक्ट कर दिया। डज दैट मेक सेंस? वी रिफ्लेक्टेड द सेम लाइन डाउन लाइक दिस। इज इट क्लियर? आर यू विद मी? Perfect. Guys, is this clear? Everyone? Are you all with me on this? Yes? So perfect. So we are done with this. सिर्फ एक चीज रह गई है और उसके बाद इंशाल्लाह we're also kicking off with the next chapter. The one thing that is left in this chapter is that if I give you guys
a speed time graph जी बिल्कुल negative sign only indicates direction 100% और कोई मतलब नहीं उसका. And I say that this is a flat line. This is this. I give you values. This is 20. This is 5 and this is 8. I want you to calculate the distance traveled by the ball. Please hurry up. Please tell me what is the distance traveled by the ball. Number 1. Number 2. You have to tell me the acceleration up to 5 seconds. This is time in seconds. And you have to tell me the acceleration between 5 seconds and 8 seconds. Hurry up. Shabash. Yes, Basil, go ahead. सर मैंने ये पूछना था कि ऊपर वाले ग्राफ में जो जब बॉल एक्सेलरेट कर रही होगी सर जब नीचे आ रही होगी लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी क्योंकि नेगेटिव में है डाउनवर्ड आ रहा है ऐसे ही है. यस सर And acceleration is always due to gravity and downward direction is negative. You'll say yes, it's negative because हमने upward direction को positive लिया होगा. Okay sir, thank you. No worries. What is the answer to the first part, everyone? Yes, Hassan, go ahead. हाँ सर, मैंने कहना था कि ये क्वेश्चन जब आप करा लें सर उसके बाद इससे पिछला वाला करा देंगे एक दफा, बस उसको दिखा दें स्क्रीन पे, मैं नोट करना है. ये देखो. Does this help? हाँ सर, ये ठीक है, थैंक यू. चलो, perfect. Hurry up, everybody. Shabash. So distance traveled by the ball. Rohan says 130, 0 and minus 6.7. उसे तीनों ऐसे बता दिए. Is that right? पहला सबका 130 आ गया. So area under the graph निकालना है. So you have a trapezium. So the formula will be half into height into sum of parallel sides. एक parallel side ये, दूसरी parallel side ये. So 5 plus 8. So that's going to be 10 into 5 plus 8, which is 13. So the answer is going to be 130 meters. Second is acceleration. हाँ, triangle and square करके भी कर सकते. Triangle and rectangle करके भी कर सकते हैं. What is the acceleration up to 5 seconds? Up to 5 seconds, it's a flat line. And you know, gradient represents acceleration. So acceleration is 0 meters per second square. Do not forget the unit. And when coming down, you know it is decelerating because it's a downward sloping line. Acceleration is going to be negative. So acceleration is v minus u over t. Your final speed यहाँ पे, final speed is 0 meters per second. Finally रुक गया ना आके 8 seconds पे. So 0 minus initial कितना है? Initial is 20. Divide by time. और time कितना लगेगा इसको? Time लगेगा इसको 3 seconds का. So 0 minus 20 over 3, you will get minus 6.67 meter per second square. Are you guys with me on this? Sir? You didn't get, हाँ जी. Rija didn't get the 5 plus 8. पहला part हाँ. बता दें फिर से. So trapezium का formula होता है, I did this in my O levels, which is half into height into sum of parallel sides. Do you remember this? Yes. So can you first identify that this is the trapezium? ये सबको trapezium नजर आ गया? आप जब ये trapezium नजर आ जाए, तो आपको समझ आनी चाहिए that these are your two parallel sides and this is the height. सही है? अब मुझे बताओ ये जो ये वाली parallel side है, इसकी height, इसकी length कितनी है? इसकी length होगी ना 5. और जो अगली parallel side है यहां से यहां तक, उसकी length कितनी है? 8. 8. तो ये 5 plus 8 हो गया, sum of parallel sides हो गई. और what is the height of this trapezium?
20. 20. तो ये फॉर्मूला लगाया और आंसर लगा गया. Thank you, sir. All right. Yes, you can break it into a rectangle and a triangle. That will also give you the same answer. 100%. Acceleration, I've written to 3 significant figures. मैंने आपको बताया तमाम जवाब can be written 2 to 3 SF. Guys, are you with me? Come on. Sir, Yes. sir, last part में acceleration को मतलब negative लिखना जरूरी तो नहीं होता ना, उसको positive भी लिख बिल्कुल सकते. बिल्कुल जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि मैंने acceleration मांगी है. Acceleration is going to be negative because acceleration is gradient. और इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव. अगर आपको वो भी ना समझ आए तो आप v माइनस यू ओवर टी डायरेक्ट लगाओ. फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, तो 0 माइनस 20 आपका आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा. फातिमा, अगर मैं पूछता व्हाट इज योर डिसेलरेशन बिटवीन 5 सेकंड एंड 8 सेकंड, तब आप क्या लिखते? बताएं फातिमा. If I were to ask you what is your deceleration between 5 seconds and 8 seconds, what would you write? यही आप इसी आंसर को पॉजिटिव करके लिखेंगे, क्योंकि डिसेलेरेशन होता है माइनस एक्सेलरेशन. अगर वो डिसेलेरेशन मांगता तो आप लिखते डिसेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस 6.67. डिसेलेरेशन विल बी प्लस 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई थिंक आप इसके साथ कंफ्यूज कर रही थी उसको. yes, thank you. Is it now clear? Got it? चलें जी, Yes. perfect. Let's move on. Kinematics is now finished, and we are beginning with our next chapter, which is forces. And by the way, if your friends are in school, and they're more than welcome to take our class on YouTube, and if they want to interact as well, they can just join every Monday. Forces, everybody. Let's start with the next chapter. Thinking distance, braking distance, stopping distance, all of that you already know. उसमें कोई नई चीज नहीं है. नहीं, मैंने ये जो मैंने चीज आपको कराई है ना, इसमें सब कुछ आ गया. सही है, इसमें सब कुछ आ गया. Can somebody tell me this 130 meter, what is this? Is this thinking distance, braking distance, or stopping distance? बताएं जी. 130 meter. The entire distance traveled by the ball. Is it thinking, braking, or stopping? This is going to be stopping distance. Total distance. ये total area under the graph होता है. The entire area under the graph represents stopping distance. So इसको हम इधर ही लिख देता हूँ. इसको बोलते हैं stopping distance. Clear हो गया? अब thinking distance क्या होता है? ये जो triangle का जो area, rectangle का जो area होता है, this area. Let me shade it with blue. This area represents your thinking distance. Because इस time duration में, what are you doing? You're thinking that you're going to apply the brakes. You're thinking. So you're not speeding up, you're not slowing down. आपका पाँव ब्रेक की तरफ जा रहा होता है. मुझे बताओ ब्रेक exactly किस point पे लगती है? At which point do you apply the brake? ग्राफ को देख के बताओ, आपको चल जाएगा. At 5 meters per second. Exactly. So at this point you apply the brake. है ना? इस point पे ब्रेक अप्लाई होती है. So इस point के बाद जो आप distance travel करते हो, let me shade it in a different color. ये जो distance है, this is after applying the brake. So this is called your braking distance. Is this clear? ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि इस टाइम में you've applied the brakes, and together thinking distance plus braking distance gives you stopping distance. क्लियर हो गया सबको? Yes. Perfect. चलो, I'm going to move on now. Forces, dynamics.
Very important chapter. So forces or dynamics में Ahmed, you'll find आप booklet खोलना और booklet के अंदर there will be a lot of questions that you can try. Okay? बल्कि मैं कुछ करा देता हूँ. Let's do some questions before we start off with forces. Kinematics नहीं. ये क्या? हाँ, kinematics है. So this is 22. Let's go to page 20. Guys, please open the booklet. All of you have this booklet. Please open it. Open it. And let's try. Yeah. Question number 10. Are we done with last weight? Yeah. Yes. You've already done this. Oh, perfect. All right. Hadia. Yes, Hadia, go ahead. सर मैंने ये पूछना था कि हम थ्योरी क्वेश्चंस कब करेंगे बिकॉज ट्यूटर में हमारे पास काफी कम टाइम होता है वो करने के लिए ट्यूटोरियल में यस तो मैं आप थ्योरी क्वेश्चंस करा सकते हैं अगर आ जाए लेट्स डू इट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फोर्सेस सो फोर्सेस वाला जब हम करते हैं फिर करते हैं लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 and let's do question number 3. Yeah, chalo, let's do question number 2. Read question number 2, everybody. You already done question number 2. Aapne Hadia, are you taking the tutorials? Yes sir. So ये question number 2 आप लोगों ने किया होगा? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था हमने. वो कह रहे हैं किया हुआ. अच्छा चलें. मुझे गलती लगी होगी सर. Okay, all right. Let's do it right now. There is no atmosphere on the moon. An astronaut on the moon drops. बड़ा अच्छा सवाल है और मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा समझाता भी हूँ. आ जाएं. Let's do it. Let's do it together. There is no atmosphere on the moon. An astronaut on the moon drops a feather and a hammer from the same height at the same time. They both accelerate downwards at 1.6 meter per second square and they hit the ground at the same time. The weight of the hammer is much larger than that of the feather. Explain in terms of their weights and masses why their accelerations are equal. That's a really, really good question. And I'll also show this to you. Like, amazing. This amazing phenomenon. I will show this. One second there. Yes, here we are. All right. Can you guys see my screen? This is going to be the most interesting thing today. Can you guys see my screen? So this is one of the biggest vacuum chambers. And इसके अंदर इन्होंने reinforced steel इस्तेमाल किया because of vacuum create. समझ आता है ना, vacuum create कर देंगे तो अंदर कुछ भी नहीं, अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, बाहर से हवा आपको पूरा कोशिश करेगी दबाने की. So this was basically a nuclear reactor का हिस्सा जिसको उन्होंने remodel करके उसको vacuum chamber बनाया. So they can actually create a vacuum inside. And what they're going to do in this experiment is they're going to take a ball and a feather and some feathers up this chamber. ठीक है? अच्छा, before I play this video, मुझे ये बताओ कि what is your guess? जब ये release करेंगे और उन्होंने फेंकना है नीचे, what's going to happen? Which object will fall earlier? Oh, before I even complete my sentence, obviously the bowling ball fell earlier. Yeah? So हुआ क्या? Because there was air resistance. So air resistance की वजह से वो feathers are very light, तो वो आराम से यूं करते हुए नीचे आए और
एक जो हैवी ऑब्जेक्ट था वो ठक करके नीचे गिरा. डज दैट मेक सेंस? कॉमन सेंस. ये तो हम बचपन में देखते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं. Now what they're going to do is now they're going to shut this thing, like you can see, low oxygen, and they're going to create a vacuum. And it takes 3 hours to create a vacuum. It's not that simple. So they're going to create a vacuum. ये आप देख रहे हैं कैसे वो machine पागल हुई. It's pumping out air. All right. Let's have some sound. Six, 5, 4, 3, 1. Vacuum हुआ हुआ है. Look at that. Look at this. This is without air resistance. Clapping हो जाए यार, तो कमाल कर दिया. But wow, look at them. They're so happy. Did you see this? Did you see that? That is just crazy. Yeah. मतलब मुझे इतनी खुशी इधर बैठ के हो रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि उनको कितनी खुशी हो रही है जिन्होंने देखा होगा. The great guy, Brian Cox. Anyway, that this experiment that you just saw will now help you answer this question. That जब आप मून के ऊपर ड्रॉप, मून के ऊपर कोई एयर नहीं होगा, so it's just like you've created a vacuum. Now, will they both fall together? Can you imagine this now? Because you've seen it. And they'll hit the ground together at the same time because there's no air. Yes. So अब मेरे साथ गौर से सुनना. So थोड़ा सा फोर्सेस से रिलेटेड है, आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को भी समझाने लगा हूँ. होपफुली आप लोगों को जो अगर कोई कंफ्यूजन थी ट्यूटोरियल में तो वो आप समझ आ जाएगी. Guys, do you all know of this formula F is equals to ma? Like most of you should. मैंने समझाना है, ये हमारा टॉपिक है अगला. But you should all know that F stands for force, M stands for mass, and A stands for acceleration. Are you guys with me on that? और F is equals to ma से ही निकला है W is equals to mg. ये भी सबको मालूम है. F is equal to ma से ही निकला है W is equal to W stands for weight and G stands for acceleration due to gravity. Now, please tell me something. For the bowling ball, like for a hammer, would the weight be more or less? Hammer का weight ज़्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Hammer, the weight of the hammer will be more than the weight of the feather. Does that make sense? This line. Weight of the hammer will be more than the weight of the feather. And can I also say that this is because the mass of the hammer is more than the mass of the feather? ये भी कहना fair होगा? Feather. Would this also be fair to say? Yes. भाई जिसका weight ज्यादा हो है उसका mass ज्यादा है, जिसका weight कम है उसका mass कम है. So मुझे ये बताओ, गौर से सोच समझ के ये बताना मुझे ये बताओ that if I do G is equals to W over M, तो हैमर का वेट ज्यादा, हैमर का मास ज्यादा, फेदर का वेट कम, फेदर का मास भी कम. तो मुझे ये बताओ, would gravity, would acceleration change, or would it remain the same? Like W बढ़ रहा है तो M भी बढ़ रहा है, W कम हो रहा है तो M भी कम हो रहा है. This is the reason why their accelerations are equal. This is why they fall together.
बिकॉज जिसका वेट ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, रेशियो वाइज इट्स द सेम. जिसका वेट कम है उसका मास भी कम है, रेशियो वाइज इट्स द सेम. So there is no difference in acceleration, which is why they fall together. Do you understand this now? You are going to say, you can literally just write it like this. You can literally just write it like this. That weight of the hammer is more because mass of the hammer is more, hence G remains constant. Weight of the feather is less, mass of the feather is less, hence G remains constant. They both accelerate at 1.6 meter per second square. Is it now clear? वो बस ये चाह रहे थे कि आप 1, 2 and 3 आप हमें ये 3 चीजें समझा दें. Is it clear? और आपने बस लिख देना है hence G is same for both. Yeah, of course you get marks for writing like this. Of course. So मैं बिल्कुल बता देता हूँ. Richard, do you understand? No, why would I mind यार? मतलब 100% आपको समझ आनी चाहिए. That's the goal. Richard, मैंने जो समझाया वो समझ आ गई. Like, और आपने अब तो आपने देख भी लिया है that जब air resistance now, the things have to fall together. So याद रखो that there is no air resistance, hence W is equal to mg. This is the only force acting on you because there's no air resistance. ठीक है, मैं अब इसको लिखता हूं नीचे और explain करता हूं. Since there is no air resistance, the only force acting on the objects is the weight. That whether it's a hammer or whether it's a feather, the only force acting on both of them is the weight. Does that make sense? There's no air resistance. So दोनों के ऊपर सिर्फ weight है. अब when you talk of hammer, so hammer के लिए weight of hammer is equals to mass of hammer into gravity. And for the feather, it'll be weight of feather is equals to mass of feather into gravity. Does that make sense? So when you will make G the subject, you will get weight of hammer over mass of hammer. And when you make the G the subject in the second case, you get weight of feather over mass of feather. Since the ratio of mass and weight is the same for the feather and the hammer. मतलब ये रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि जिसका वेट ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, जिसका वेट कम है उसका मास कम है. इसका मतलब है रेशियो सेम है. क्या ये बात समझ आई है? जिसका वेट ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका वेट कम उसका मास कम. इसका मतलब है रेशियो ऑफ मास एंड वेट इज द सेम, हेंस एक्सेलरेशन इज द सेम. No, I won't say mass cancels out, Shazil. I would say that if let's say this thing weighs 2 times more, it's because its mass is 2 times more. So वो जो 2 का फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाता है. मास तो रहता है उसका, बट अगर उसका मास ज्यादा है, लेट्स से 2 गुना ज्यादा है, तो उसका वेट भी 2 गुना ज्यादा होगा. तो वो जो 2 का फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है. Yes, you can write it like this. Like you don't need to draw it, but you can write it like that. Is it clear now? आप समझ आ गई सबको? बासिल क्वेश्चन पूछे. सर मैंने पूछना था कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि since the hammer has more mass, so to achieve the same acceleration, more force will be required. इतना टेक्निकल क्यों लिखना है आपने? आप सिर्फ ये कहो कि because since the hammer has more mass, hence it has more weight. Feather has less mass, hence it has less weight. The ratio will be the same. देखो ना, weight और over mass करना है, weight over mass करना है. feather का weight भी कम है, feather का mass भी कम है. hammer का weight ज्यादा है, hammer का mass भी ज्यादा है. तो ratio तो वही रहेगी. more force required की बात नहीं है.
हमने सिर्फ ये बताना है कि वो रेशो ऑफ वेट टू मास सेम है, जिसकी वजह से ग्रेविटी कांस्टेंट आ रही है. Okay, sir. Got it? Chalo, perfect. Moving on. Both the feather and the hammer take 1.5 seconds to fall to the ground from rest. Calculate the speed of the object as they hit the ground. Bataye ji. How will we do this? How will we calculate the speed of the object? Shabash. What formula are we going to use? Shabash. Acceleration is going to be v minus u over t. Acceleration kitni thi? Mujhe batao, Hadia. What was the acceleration? Was the acceleration 1.6? Yeah, is equals to final velocity minus the drop from rest. Initial velocity 0. And how much time does it take you? 1.5 seconds. So यहाँ से speed निकाल लें. 1.6 into 1.5. Correct. Tell me what the answer is. 1.6 into 1. देखो मेरे अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, but I still have a calculator with me. You guys should also do it in your calculators. Your answer should be 2.4. 2.4 गधे, घोड़े, हाथी, भैंस, बकरियां, क्या चीज? बुरा बोला करे ना. 2.4 क्या? What 2.4? ले. मैं इसलिए पूछा था, मुझे पता था कि कोई ना कोई गलत लिखेगा. स्पीड की बात हो रही है. Has to be in meters per second. Meter per second. Got it. Now, you have to sketch the speed time graph for the fall. 1.5 second उसने आपको बताया हुआ है. 1.5 second पे you hit, I think you hit the ground, don't you? It takes 1.5 seconds to fall to the ground from rest. हाँ जी, बताएं जी. बताएं. 1.5 second पे पहुंचने पे शुरू में कितनी स्पीड है इसकी? इस लाइन को पढ़े. शुरू में स्पीड कितनी है उसकी? अहमद मलिक, ये तो मैं पूछ रहा हूं. शुरू में स्पीड, ये इस स्टेटमेंट को पढ़ो अहमद. Both feather and hammer take 1.5 seconds to fall to the ground from rest. मतलब क्या? कि सर जब आप शुरू कर रहे हैं अपना मोशन तो आप रेस्ट पे हैं. समझ आई बात की? You're starting from 0 meters per second. You're starting from rest. अंडरलाइन करो, इसको हाईलाइट कर लो, लिख लो. समझ आई? क्लियर है सबको? सो यू गोना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 से. और अब मुझे बताओ, नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? स्पीड तो बढ़नी चाहिए. नीचे गिरते हुए स्पीड कम हो ही नहीं सकती. अब आपने सोच समझ के बताना है कि एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर की हुई है, जो कि मून के ऊपर है या किसी और प्लैनेट पर जिसका एटमॉस्फेयर नहीं है. तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन बनेगी या कर्व बनेगा? सोच समझ के बताना है. Well done. I'm so happy. क्योंकि when there's no air resistance, जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है? बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है अहमद. ये मैंने जो when I teach the chapter, I'm giving you so many pointers. वो सारे pointers आपके जहन में होंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा. वो सारे pointers की समरी बनाएं अपने लिए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगे इंशाल्लाह. So no air resistance, it's a straight line. If there was air resistance, it'll be a curve. और आपने दोनों ग्राफ्स किए, अपने नोट्स में खोल के देखिएगा. So this will be your graph. 1.5 seconds पे आपने दिखाना है कि जी हमारी स्पीड कितनी आई है 1.5 सेकंड पे. वो स्पीड भी बतानी है आपने. कितनी स्पीड आई है 1.5 सेकंड पे? कितनी स्पीड आई है? शाबाश. 2.4 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड उसका यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. अब क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. अब जल्दी से बताओ. यूज द स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिटरमिन द हाइट फ्रॉम व्हिच द ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड. कैसे निकालें हाइट? क्या करें? शाबाश. You just take this area under the graph. So area under the graph is going to be half into base into height. That's going to be half into 1.5 into 2.4. So that's it.
half into 1.5 into 2.4, that gives you 1.8. 1.8 क्या? ऐसे फिर 1.8 लिख के बैठ गए. 1.8 meter. 1.8 meter. Got it? Chalo, perfect. Now question number 3, I'll ask my TA to do it, and inshallah, you have a new TA, inshallah. I hope you guys have a great experience on Thursday. High class kal hogi. Done. We're done with kinematics. Tomorrow we're starting with forces. Take care, everybody. Thank you so much for joining in. Thank you, YouTube audience.